So this is the question from June 23, variant 21, question 3A. It says, with the help of a formula, explain the meaning of cross-elasticity of demand and consider which determinants are most important in establishing the size and sign of this question. I remember this word over here, determinant, it's sort of like messed up with students and they were confused as to determinants की बात की है तो what do we need to actually write? But let's work with the same idea that you have to do pehle knowledge and understanding. The first part, they've asked for a formula, they've asked for the meaning of cross elasticity of demand, and they have asked for um, the third mark, कुछ ना कुछ तो देना ही होगा. So I think this is what we can do for this one. Um, the first thing is you have to define cross elasticity of demand. तो सबसे पहले तो हमें वही बात लिखनी होती है कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेजर करता है. It measures the responsiveness. It measures the responsiveness in uh, demand for good A, demand for good A, due to change in price of good B. तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई. इसको आप फिर फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर लें. XED is equals to percentage change in quantity demanded for good A divided by percentage change in the price of good B. अब इसको आपने आसान लफ्जों में समझाना है. You can do it in simple English also, but once you've done this, then my recommendation is then you can explain in other terms. फिर उसके बाद third mark for knowledge and understanding, मेरी नजर के अंदर there are two things that we can talk about. That XED की जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव आ जाती है तो then the two goods are supposed to be substitutes. And if your XED is negative, then the two goods are supposed to be complements. Ab, this is where the trick, the confusion actually comes के प्लस माइनस की बात करें या ग्रेटर देन वन लेस देन वन की बात करें. तो व्हाट आई वुड डू इज फॉर ब्रीफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड जस्ट सिंपली मेंशन that if XCD is greater than 1, then that means that it is cross elastic. Okay, which means that the percentage change in demand for good A is greater than the percentage change in the price of good B. However, if XED is less than 1, then the two goods are supposed to be inelastic, which means that the percentage change in quantity for good A is less than the percentage change in the price of good B. I'm just throwing out, क्योंकि knowledge and understanding की बात है, तो I'm just throwing out knowledge over here because another thing, I think I might go into the analysis domain if I do all of those things. So I think मेरे ख्याल में तो just this is good enough for 3 mark. फिर analysis के अंदर we'll go into much deeper details कि ये किस तरह से values आई हैं और greater than 1, less than 1 का असल में मतलब क्या है. Because remember, I've only told कि elastic है greater than 1, but what does it mean in the context of substitutes and complements, and what does this mean inelastic in the context of substitutes and complements? I feel that is too much information that should be um, discussed in the analysis wala part. जिसके अंदर, let's read the question one more time. Which determinants are most important in establishing the size and sign? I said, what are those things जो डिसाइड करता है कि इसका साइन क्या होगा, प्लस के माइनस, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, या दैट विल डिसाइड के
साइज क्या होगा, ग्रेटर देन वन या लेस देन वन? व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स विच आर स्टैब्लिशिंग? तो मुझे तो इसमें जो सिंप्लिसिटी नजर आ रही है वो ये है कि फॉर माय एनालिसिस डिस्कशन what I would do is I would talk about one of the determinants which decides the sign is whether the good is substitute or complement के अंदर. Okay, one of the determinants I would say if the good is substitute. अब मैंने जब mention किया है substitute है, तो I must also mention what do I mean by the two goods are substitutes. Uh, Substitute goods are replaceable goods. I would like this term to be used, not anything else like alternative, other option, good that can be used instead of this. If you want to use any of those terms, do that, but after you've mentioned that substitute goods are replaceable goods. Okay? अब जब दो goods आपस में replaceable है, substitutes हैं, for example, you have एक टी एंड कॉफी ज्यादातर चलता है, तो वी कुड सजेस्ट समथिंग लाइक दिस, टी एंड कॉफी. ओके, तो व्हाट आई वुड से इज आई एम गोना यूज द फॉर्मूला XED is equals to how much the demand for coffee will change when there is a change in the price of tea. I'm going to use the formula because I want to prove the sign. Okay, so this is what I'll say. So based on this formula, if the price of tea rises, then the demand for coffee will also rise, and this will lead to a positive value of XED. अब साइन के साथ मैं इसके साथ बाय द वे फॉर्मूला के साथ प्रूफ कर सकता हूं कि प्राइस गोज अप बाय 10%, द डिमांड गोज अप बाय 20%, gives me a positive 2 की value. Positive says that the two goods are substitutes. Right? तो ये इस तरीके से हम इस बात को एक्चुअली एक्सप्लेन कर सकते हैं. आई एम यूजिंग द फॉर्मूला टू एक्सप्लेन द प्लस साइन. ठीक है, उसी तरीके से another determinant is जो साइन को डिसाइड करता है is whether the two goods are complements to each other. ठीक है, complement goods are jointly demanded goods. Okay, अब jointly demanded goods के अंदर example के अंदर you could suggest like car and petrol. Jointly demanded is the term. You can also use things like the two goods that are used together, you know, um, two goods which can be used with each other. Jointly demanded is the term we prefer first. फिर आपको उसको further जैसे भी explain करना है. And again, I can do the same formula that how much the demand for cars will be affected if there is a change in the price of petrol. ठीक है, सो फॉर्मूला के केस में मैं ये कह सकता हूँ if the price of petrol rises by 10%, then the demand for cars may fall by let's say 5%, and that would lead to a negative 0.5 की value, where negative shows that the two goods are complements. अब ये MCQs के लिए आपको ये बात पहले से याद होनी चाहिए कि complements की हमेशा जो वैल्यू निकलती है वो माइनस निकलती है, and I've just shown you using a formula that what does it mean. ठीक है? So I should get 1 mark for this, and I will do the write-up and the explanation, like if price of petrol falls, then demand for car rises, therefore
XED is negative. Okay. जब आप ये आंसर लिखते हैं तो obviously you have to go into much more detail, but as examiners, we're just picking out on the key things that have been discussed or not, right? तो इस केस के अंदर नेगेटिव को कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर बच्चे ने कनेक्ट किया है विद jointly demanded, I'll give the 1 mark. I'm not gonna be petty with that, you know. अब ये तो दोनों बातें हो गई साइन की. But if you go back to the question also says not just the sign, but the size. अब जहां तक size की बात है, whether it's greater than 1 or if it's less than 1, I'll just briefly explain the idea that if XED is greater than 1, then the two goods have a strong relationship. Okay. So, for example, ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिखी हुई है जिसके अंदर uh, if you see the number over here, मैंने उसमें +2 निकाला है XED के अंदर. I have a +2. So I can actually give reference to that example above, if XED is equals to +2, this means that the two goods are, if XED is greater than 1, the two goods are very strong substitutes to each other. Okay? Or second case के अंदर, if you see XED की value is negative 0.5, since XED's value is less than 1, they are weak complements. So if the value is greater than 1, they're supposed to have a very good relationship, very strong relationship. एक की price will have a very large impact on the demand for the other. And XCD के case के अंदर जो है, it's going to be a weak complement because 10% change in the price of petrol leads to only 5% decrease in the demand for cars. That would suggest, they might be weak complements. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि ये कुछ आपके डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं. Honestly, there is more to it. Just this is not enough. So, for example, other determinants के अंदर you can even say, other than this, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा important तो यही वाला था. But other than this, another thing that I would give importance to is like the consumption pattern of the consumers, how easily are they willing to change their habits? अगर let's suppose if the price of tea goes up, अब लोगों की habit पे depend करता है कि will they really move away or would they continue to consume tea because it's an inelastic, you can't just switch between the two goods, people have preferences, right? तो ये भी एक determinant है, which might decide whether the two goods are substitutes or not, or XCD की value will be greater than 1 or not. Also, how many substitutes are available? If plenty of substitutes are available and they are good substitutes, people will easily move away, and you will have an XCD की value of greater than 1. तो stuff like that can be talked about. ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा important relationship जो हमें नजर आती है that we would like to talk about, because let's go back, evaluation में क्या लिखेंगे? Evaluation में you have to answer which one is the most important in establishing. ठीक है? तो sign and the size. So which one is the most important? So it's about the relationship between the two goods. ऊपर जो मैंने mention किया है, जो write-up हमने लिखा है, that's purely about the relationship, right? Specifically, उसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात करें, like for example, this is how would I would write my evaluation if I was to just dictate it.
I would say like the closeness of the relationship between the two goods is the most important factor influencing both the sign and the size. ठीक है, because क्वेश्चन से मैंने उठाया है क्योंकि क्वेश्चन वाज सेइंग कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइन और साइज के लिए. तो आई विल लिटरली यूज द सेम लैंग्वेज, बट साथ में मैं ये भी बता दूंगा इन माय ओपिनियन द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. ठीक है. So like without a strong link in use or consumption, price changes in one product will have like little impact on the other. However, other factors such as like brand loyalty की आप बात कर सकते हो, और जो अभी हमने ऊपर बात की कंज्यूमर हैबिट्स हो गया, these can also have an impact. You can even talk about like the degree of substitutability there is. अगर सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, ग्रेटर देन वन होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट. सो जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ दैट आइडिया while making sure that I mention that the closeness of the relationship is one of the most important in determining the size, and the size which is substitutes and complements, right? So around that line I would sort of suggest. Evaluations are tricky. So I would say, okay, in the beginning, let's leave the evaluation for the last very gaining के लिए near exam. But right now, the 6 out of 8 needs to be picked. That is where your A is. ठीक है. Analysis में if you're losing marks, फिर थोड़ा सा problem ज्यादा हो जाएगा. All right, moving on. Another question that I wanted to pick today was um, the 12 markers. ठीक. 12 marker के अंदर, because that's where the problem really exists. In fact, what I'll do is I'll show you two questions. Let me open it's there right in front of you. I am first going to look at this one. November 23 ka. This is the one that I'm going to show you. And we'll do. November 23 ke andar, they're saying assess whether PED or YED is likely to be of greater importance to a firm producing cars. अब एक फर्म है, गाड़ी बनाती है, ठीक है, टोयोटा करोला और BYD, whatever. They're producing cars. उनके लिए पीईडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इनकम इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एंड व्हेन वी से इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली द इंपॉर्टेंस इज कमिंग फ्रॉम द यूजफुलनेस ऑफ इट. Okay, so if something is useful, you'll say it's important. I'll work out the PD key values, and that value is going to tell me important information. I'm going to use that for my own benefit, for my firm's benefit. Same goes with income elasticity. It has some usage. It tells me certain information. I can use that information for my own benefit or the firm's benefit. Zabardast. But then they have their own limitations also. Okay? And limitations could include all the sampling error and calculation, time consuming, obsolescence, you know, why don't we discuss cross elasticity of demand? I think that would be very important to car producing industries because competition stiff hai, right? So how do you structure that information? And now let's compare that with this one, November 23. So it has come in the same year. सिर्फ वेरिएंट डिफरेंट है, दैट मीन्स 23 इज अनदर वेरिएंट. हमारा 22 था. हमारा क्वेश्चन जो था वो मैं नहीं करा रहा हूँ. आवर क्वेश्चन वाज दिस वन, जिसमें पीएस और क्रॉस इलास्टिसिटी की बात हुई है इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी. I'll talk about a similar question like this. In fact, I'll make a comparison iski marking scheme to the rest of the two. Interestingly,
प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो ये वाला क्वेश्चन है 21 का जो वेरिएंट है उसकी मार्किंग स्कीम was way different or way off, I would say, from current standards जो हमारा 22 और 23 के वेरिएंट्स के अंदर था. आफ्टर चेकिंग 2023 एंड अभी 2025 का मैंने पेपर देख लिया है, जो बच्चों ने अभी जून में दिया था और अभी जो नवंबर में दिया है. व्हेन आई एम गोना चेक, आई हैव ऑलरेडी लुक्ड एट द क्वेश्चन बिकॉज वो भी इलास्टिसिटी के ऊपर ही आया है. तो उसके अंदर जो कंसिस्टेंसी नजर आ रही है वो 21 की नहीं है, वो 22 और 23 वाली कंसिस्टेंसी हमें नजर आ रही है. बट recent years should be more important, but we cannot rule out that how should we or what are the things that should be there in your answer. ठीक है, तो let me do that question. नवंबर 23 का हमारा क्वेश्चन है. November 23, variant is 21. इसका हम बाय द वे हमारे पुराने लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि इसका पार्ट 1 वाज डिमांड सप्लाई, तो वी हैव डन दैट इन डिफरेंट लेक्चर्स. So you can actually look for its solution also. So what I'll do is I will walk you through its marking scheme, and then I'll tell you कि हमारे वेरिएंट के हिसाब से इसकी असल के अंदर क्या होनी चाहिए थी. ओके, पहले तो क्वेश्चन देख लो दोबारा एक दफा फिर से. ओके, द क्वेश्चन इज assess whether PED or income elasticity of demand is likely to be of greater importance to a firm producing cars. Please cars का रेफरेंस जरूर दिया करो अपने आंसर में. A 12 marker, as mentioned, or it's been a while, so let me just mention one more time, is divided in 8 and 4 marks, where assessment objective 1 of knowledge and understanding and assessment objective 2 of analysis is basically taken together. It's written together, it's graded together. Level 1 gives you 1 to 2 marks, level 2 gives you 3 to 5 marks, and level 3 gives you 6 to 8 marks. Evaluation is also broken down into 2 levels. You can get 1 to 2 marks, you can get 3 to 4 marks. ये आपका breakdown होता है. आंसर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है whether you qualify for a level 3 or not. For a question like this, compared to our marking scheme, this is how you would qualify for a level 3. सबसे पहले PED के uses, usefulness, okay, or you could say the advantages, or usefulness लिख लेते हैं. Sorry, what do you mean by usefulness? And the limitations. So let me go over the usefulness wala part. Normally, the way the kids answer this question is that first they define PED. Right, Price yeah, that's what I elasticity was. of demand is it measures the responsiveness in quantity demanded due to change in price. If PED is greater than 1, it means it's elastic because percentage change in quantity is bigger than percentage change in price. While PED can be inelastic, where percentage change in quantity is less than percentage change in price. ये एक क्वेश्चन PES का आया था अभी जून के अंदर. We did not give marks for that. We don't give marks for definitions in a 12 marker. Not at least recently. ये 2023 के अंदर इस वाले वेरिएंट में मार्क दिया है. मेरी नजर में अब नहीं देते. I've checked
3 to 4 sessions, consistently, they are not giving any more marks for the definitions anymore. But I do recommend kids to do it. It might get them started with the essay. But unfortunately, what we've seen is that kids spend so much time in defining that they actually forget or fail to actually write the usefulness of it. अगर आप उस डेफिनेशन को किसी तरह से यूजफुलनेस में कन्वर्ट कर लो, what do I mean? This is what I mean by what I'm about to say. What I mean is कि आप कहते हैं जी पीडी की यूजफुलनेस है. यूजफुलनेस किधर है? पीडी कैन बी यूज्ड फॉर प्राइसिंग स्ट्रेटजी. तो अगर आप लिखते हैं फर्म के लिए पीईडी की नॉलेज जो है, आई थिंक यू शुड जस्ट डायरेक्टली आंसर, स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट firms can use PED for pricing strategy. How? If they know that their product is elastic, okay, they should lower the price and that will increase their revenue. Okay, so that is a useful information, but that is so प्लीज सिंबल्स में नहीं लिखोगे, वर्ड्स में लिखोगे जो मैंने बात की है. सो इफ द प्रोड्यूसर नोज दैट देयर Yes, sir. प्रोडक्ट इज इलास्टिक, then they should reduce the price. That will increase the revenue. But elasticity को थोड़ा सा define करना, what about the formulas and all of that? So this is what I would do. What I mean is, when PED is price elastic, the percentage fall in the price is less than the percentage rise in the quantity demanded, and this leads to total revenue to go up. That is fantastic. I'll give you 2 marks for this, actually. I would give you level 1, 2 marks. बच्चे ने जबरदस्त usefulness बताई है. But I would be even more happier if the kid then says, if PED is less than 1, the firm should increase its price to increase the revenue. Okay? Because when the product is price inelastic, the percentage rise in the price is greater than the percentage fall in the quantity demanded. So that leads to revenue going up. That's a great. अब देखो मैंने वही, I've pretty much given knowledge and understanding along with analysis, and I've combined it. This is where you get the mark. Not for telling me what is elastic, what is inelastic, how do you define it, what is the formula. Nope. For 12 marker, there's no room for that. Okay? People spend pura page, dear page, 1.5 page in just defining the terminologies. And the moment they start writing the important bit, turns out कि एक पैराग्राफ लिखा है, because the kid felt कि यार मैंने सब कुछ तो पीछे समझा दिया. But honestly, you're really not answering the question. The question is about which one is more important. तो पहले मुझे उसके यूजफुलनेस तो बताओ. तो यूजफुलनेस अगर तुम ये इस तरह से लिखते हो, अच्छा, along with this, a lot of times kids, this is what they also do, and that would be just phenomenal if you do that. That they would mention that the firm, not just for pricing strategy, but they would know कि अगर उनका good elastic है, and if they raise the price, then the revenue will fall. They should lower the price to increase the revenue, but if they raise the price, then the revenue will fall. That's an added information, but it's a relevant information. उसी तरह से inelastic में recommendation is you should raise the price to increase revenue, because if you lower the price, the revenue will fall. Zabardast. So basically, elastic के price rise, price fall, and the impact. Inelastic के price rise, price fall, and the impact, and the recommendation what you should do. ये usefulness enough. PD के point of view say this usefulness, that's all I need. Lekin, what about the limitation? Because you
have to counter also. अब पीईडी की लिमिटेशंस हैं क्या? ओके, पीईडी की क्या, यू नो, व्हाट इज, हाउ पीईडी, व्हाट डज इट लैक, लेट्स से दैट, कि उसमें क्या लैक करता है? अच्छा, मैंने कार इंडस्ट्री की कोई बात नहीं की है, आई शुड टॉक अबाउट, जब ये मैं अपनी राइटिंग कर रहा हूं ना, इसको मैं फर्म की जब मैं बात कर रहा हूं तो कार प्रोड्यूसर का बस मैं अगर वर्ड डाल दूं ना बीच में, इट विल डू द वर्क फॉर मी, इट विल मेक इट रेलेवेंट कि कार प्रोड्यूसर को रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसको गाड़ी की प्राइस कम कर देनी चाहिए, अगर So उसकी डिमांड इलास्टिक है। generally, if you don't mention, then they don't deduct your marks, right? दे शुड नॉट, बट अगर एवेल्युएशन में तुमने गाड़ी को मेंशन नहीं किया तो देर इज अ गुड चांस दैट यू Yeah, माइट नॉट गेट एनी। इवेल्युएशन में तो मस्ट है, but I yeah, would very, definitely recommend you कि please start using it, because रेलेवेंसी आती तब है कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है कि यार पेट्रोल सस्ते होने के ऊपर क्या होगा कार इंडस्ट्री के अंदर, और तुम मुझे थ्योरी बताते हो लेकिन पेट्रोल और कार की बात नहीं करते हो, तो मैं बोलूंगा यार, मतलब, you're really not answering my question. My question is एक कार प्रोड्यूसर के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, so where is the relevancy in that? So you should do that. It is must to do that, in fact. Moving on. Now, I want to talk about certain problems. There are problems with PED. वो problems क्या हो सकती हैं? एक तो हम बात करते हैं पीडी के अंदर in terms of the limitations, कि यार लिमिटेशंस ये है कि जो पीईडी की वैल्यूज आपने कैलकुलेट की है, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, I need to question that how reliable are the values, कि मैं अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एक सिचुएशन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं तो क्या ये वैल्यूज इतनी रिलायबल हैं, क्या मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूं फॉर माय रेवेन्यूज टू राइज और फॉल? बिकॉज रिमेंबर, नंबर वन, ये वैल्यूज आपने निकाली कहां से? सबसे पहले तो व्हाट डिड यू डू? You probably did a survey, and survey has problems. Survey has sampling issues. Surveys have, जो भी बंदा सर्वेज अपने फिल कर रहा होता है, देर आर biases, right? You need to take that into account. Surveys are time consuming. एंड बाय द वे, जब वो इतना टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं कि वो ऑब्सोलीट भी हो सकते हैं बाय द टाइम यू गॉट द फिगर्स, कैन यू रिलाई ऑन दोज फिगर्स? लाइक फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, लास्ट ईयर ईद के ऊपर गुल अहमद डिसाइड्स वी वांट टू गिव सेल, they gave 50% sale, and that led to an increase in the demand, whatever percentage it was. Okay, now let's take those numbers for different articles and say कि ठीक है जी, लास्ट ईयर जब हमने प्राइस 50% रिड्यूस की थी तो होम टेक्सटाइल में ये हुआ, मेन टेक्सटाइल में ये हुआ, विमेन्स क्लोथिंग में ये हुआ, सो देयर इलास्टिसिटीज आर such and such. Can I use the same elasticity के figures this year? Because remember, this year the dynamics can change. Last year you might be in a recession. This year recession might be off. Last year your competition was not so developed. This year your competition is much more developed. तो क्या लास्ट ईयर के फिगर्स इस साल मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो सेम गोज फॉर द कार इंडस्ट्री, कि देखो कार इंडस्ट्री के अंदर हर साल के सेल्स के फिगर्स डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंपटीशन. दिस ईयर car industry in Pakistan has become very competitive. Almost 13 to 16 new car companies have come in. So that has just all of a sudden made the car industry a lot more elastic than the previous years. तो क्या मैं previous years का डेटा इस साल लगा सकता हूं और बोल सकता हूं कि एसयूवी जो है वो इलास्टिक है with a number of 2? Maybe it is 4 now. It's much more elastic because
So many competition in SUV and truck industry has come. So this is what limitation is about. Okay, how much can you rely on the PED value? Because there are problems with it, right? So छोटा सा इसके ऊपर अगर आप पैराग्राफ लिख लेते हैं तो what it does is it brings your answer to almost like mid, I would give you like a mid or almost 5 over here in level 2. बिकॉज आपने क्या किया, पीडी की यूजफुलनेस बहुत अच्छे से मुझे समझाई और उसकी लिमिटेशंस बताई, तो मैक्सिमम आई कैन गिव यू इज level 2 5 marks because you haven't spoken anything about income elasticity. So to qualify for a level 3 you must talk about income elasticity of demand and how it is useful for a business. And तो YED की मैं अब नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। YED है ना, क्रॉस तो नहीं था, या इट इज YED। तो एक अप्रोच ये है कि बच्चे डेफिनेशंस के अंदर YED की पूरी मुझे डेफिनेशंस और ये देना शुरू कर दें। ठीक है, दैट इज वन अप्रोच टू दिस होल थिंग। द प्रॉब्लम विद दैट अप्रोच इज आई कांट गिव यू मार्क्स। YED की यूजफुलनेस क्या है? तो YED की यूजफुलनेस फॉर अ बिजनेस is knowing whether the product that they are producing is normal to inferior. If YD value is plus, the good is normal. Like example could be like for car producers, it could be the trucks or like the luxury vehicles, SUVs or whatever. Now those are normal goods, right? अगर एक बिजनेस को पता है कि अगर उसके प्रोडक्ट की YD प्लस में है and if income is rising in the economy, their products demand will rise, right? So firm के लिए, don't you think it's a valid information that if the economy is doing well, the demand's going to rise, and if incomes are going down, economy is in a recession, तो मैं इसको बोल सकता हूँ growth and recession. So if the economy is in a recession, then the demand will fall down. So actually, this is a very relevant information because I can do my production planning accordingly. या फिर I can even do my pricing strategy based on this. अगर incomes are rising and demand will rise, I should raise the prices. I should expand my production. I should be ready to enjoy the benefits of that. But if incomes are going down and chances are my product's demand will fall down, so maybe I should cut down on my production, lower the price so that I can start selling more cars, you know? So that's a very valid information from a firm's point of view. Another thing that the firm can do for, just one second, let me just move. Another thing that the firm can do is, sorry. Another thing, इसके साथ ही, it's not complete by the way, it would be considered incomplete if you don't talk about if YED is less than 0, yani if it's negative. So then the good is inferior, okay? And if the good is inferior, inferior के अंदर हम क्या ले सकते हैं? Inferior के अंदर हम वैसे तो कॉम्पैक्ट कार्स भी इलास्टिक या नॉर्मली कंसिडर होती है, लेकिन एक हाई इनकम सोसाइटीज के अंदर फॉर अ कार प्रोड्यूसर्स इट कुड बी, कार प्रोड्यूसर ही है ना, कार सेलर तो नहीं है, तो मैं सेकंड हैंड मार्केट्स को भी लेकर आ सकता हूँ। बट लेट्स से अगर किसी इकोनॉमी के अंदर कॉम्पैक्ट कार्स आर कंसिडर्ड इंफीरियर, तो उस केस के अंदर क्या होगा? इफ इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू ग्रोथ देन द डिमांड विल फॉल, एंड इफ income falls down then the demand will rise. So again, same idea, they can plan on the production and pricing strategy के लिए
they can actually use this information. If you write this, I can give you level 6, level 3 up to 7 marks maximum I can give you, right? अगर ऊपर की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम होगी तो मैं लेवल 5 मार्क भी दे सकता हूँ, लेवल 3 5 मार्क. In order to get maximum, it is a must that you write about YED के limitations. कि YED यूज करने की क्या limitations हैं. By the way, YED की limitations are pretty much similar to what XED की limitations are. Sorry, PED की limitations, that you have to calculate the numbers and numbers cannot be considered reliable, positive, negative. Income to income vary करती है ना because of that. Limitations क्या है? एक तो again you can have calculation errors. Time consuming, obsolete होने का खतरा of the numbers that you've taken out. एक ये बात हो सकती है. एक बात मैं ये लिख सकता हूँ, and it generally applies to all elasticities also, कि आप एक वक्त में एक elasticity पे rely करना is not a good idea. You should look into various elasticities. Even car industry के अंदर cross elasticity of demand also matters a lot. तो आपको उसको भी देखना चाहिए. um, इसके अलावा वाईडी के perspective से, one of the things that for a car producer, what we can say is that, um, again, I feel this is more of an evaluative statement, is firms cannot control incomes. ठीक है. एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज, क्योंकि प्राइसेस आप कंट्रोल कर सकते हो, आप प्राइस बढ़ा सकते हो, अपने प्रोडक्ट की कम कर सकते हो, लोगों की इनकम्स को आप नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इंटायरिटी ऑफ द इकोनॉमी. So you don't have power over that. So firms cannot control incomes. ये एक इसकी लिमिटेशन है, तो इसलिए वाईडी के ऊपर उनके पास ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा. अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो है, वाईईडी फॉर गुड्स can vary based on people's income. What I mean by this is, and you can elaborate on this, is कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मोटर बाइक इलास्टिक होगी, इनकम इलास्टिक. इफ इनकम गोज अप दे वुड वांट टू बाय मोर ऑफ दैट. उनके लिए नॉर्मल होगा, सॉरी, राइट. लेकिन उसी पाकिस्तान के अंदर हाई इनकम लोगों के लिए मोटरसाइकिल कैन बी कंसिडर्ड एन इंफीरियर गुड ऑल्सो. तो ये बंदे टू बंदा, इनकम टू इनकम, हर गुड की इलास्टिसिटी चेंज हो सकती है. तो फर्म अपने प्रोडक्ट को नॉर्मल कंसिडर करे कि इंफीरियर कंसिडर करे, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, अ प्रोडक्ट लाइक एरियल, जो डिटर्जेंट है. नाउ इज इट अ नॉर्मल गुड, इज इट एन इंफीरियर गुड? If income goes up, people will buy more of it or less of it. Okay. अब मसला ये है, a family, you know, which might use even more of a superior brand than Ariel, let's say. For them, Ariel could be an inferior good, and if their income goes up, they might not be interested in that. They might be interested more on an organic based water detergent or something, cloth detergent. But आपकी जो बाकी सोसाइटी है, उनकी लो इनकम है, for them it can actually be considered an inferior, a normal good, right? तो ये तो आप फिर एरियल को क्या डिसाइड करोगे? तो मे बी यू गोना लुक एट द एवरेज इनकम ऑफ द इकोनॉमी एंड देन यू माइट डिसाइड, बट देन अगेन, हाउ मच कैन यू रिलाई ऑन दिस फिगर? तो So it's बेस्ड ऑन subjective, व्हाट वी right? डिस्कस,
Yeah, because it varies with people's income. That's why it makes it a little more on the subjective side, that how will you determine as a producer कि तुम्हारी गाड़ी नॉर्मल है कि इंफीरियर है. रिमेंबर पाकिस्तान के केस में ऑल्टो इज अ नॉर्मल गुड, एवरेज पाकिस्तान के हिसाब से देखी जाए, बिकॉज 30 लाख रुपए की गाड़ी है. लेकिन अगर आप हायर इनकम ग्रुप्स में वेस्टर्न इकोनॉमीज में देखो तो यही ऑल्टो वुड बी कंसिडर्ड एन इंफीरियर Inferior, कार. yeah. या सो ऑब्वियसली फिर अब आप किस तरह से इसको डिसाइड करेंगे कि ये नॉर्मल है कि इंफीरियर, एंड हाउ द डिटर्मिनेशन शुड गो अबाउट इट. एनी हाउ, finally your evaluation should discuss the question, and the question was कि पीईडी या वाईईडी दोनों में से किस पे ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग, किसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए फर्म को. तो वी वुड लाइक टू राइट अबाउट बोथ इन दिस केस. अ फ्यू थिंग्स. अब अच्छा, यहाँ जो अब हम लिखेंगे ना, हम कंपैरिजन करेंगे पीईडी वर्सेस वाईडी का. पहले तो हमने बता दिया पीडी की यूजफुलनेस प्रॉब्लम्स, वाईडी की यूजफुलनेस प्रॉब्लम्स. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस वर्सेस दैट. मेरी नजर में पीईडी जो है वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा एप्लीकेबल है, बिकॉज आप प्राइस और को वैरी कर सकते हो मच मोर इंडिपेंडेंटली एंड क्विकली, एंड दैट कैन हैव अ मच क्विकर इम्पैक्ट ऑन योर रेवेन्यू डिसीजंस. रेवेन्यू राइज करेगा कि फॉल करेगा. तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है फर्म के लिए मेरी नजर में पीईडी इज मच मोर वायबल. नॉट ओनली दैट, एक फर्म के लिए पीईडी कैलकुलेट करना भी ज्यादा आसान है, क्योंकि उसका बिजनेस है. वो एक महीने में चेक कर सकता है, एक हफ्ते में चेक कर सकता है कि मैंने प्राइस कम की, मेरी क्वांटिटी में कितना बड़ा इंक्रीज आया, एंड ही कैन डू दैट. मसला यह है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेक्स लॉन्ग period of time to tell us the data, because it is dependent on the economic cycle. कब इनकम्स राइज होंगी तो मैं देखूंगा मेरे प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ, कब रिसेशन में जाएंगी तो मेरे प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ. इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. आई कैन नॉट वैरी द प्राइसेस or reduce, sorry, raise the incomes or reduce the income, cannot control it in comparison to PED, where I could control the price. ठीक है. और उसकी वजह से क्वांटिटी में कितना बड़ा ड्रॉप आया, अगेन इट इज नॉट, मेरे पास इतना इजी नहीं है उसका. तो इन कंपैरिजन पर्पसेस आई वुड से कि यू नो व्हाट, वाईडी के रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़ा से ज्यादा टाइम के अंदर मुझे पता चलेंगे. राइट. उसके तो अंदर सर लोगों की. इसमें हाँ also बोलो. there can be another disadvantage such that YD को calculate करने में you're gonna kind of have to divide the population into sectors, right? So that